Good evening, friends. Welcome to Civil's Manthan. Today we will do Atmanirbhar Bharat that has been recently announced by our Prime Minister and the Minister of Finance, Nirmala Sitharamanji, is on every day from the last 2-3 days is giving certain descriptions about what all will come under this Atmanirbhar Bharat. So this Atmanirbhar Bharat is basically what? Uh, this is to make India self-reliant, right? So on the first document, you will have around 3 to 4 of the videos for this Atmanirbhar Bharat. Let's start discussing how to make our India self-reliant under this crisis of COVID-19. Well, our Prime Minister gave the vision of this Atmanirbhar Bharat Abhiyan, that is self-reliant India movement. Then there are 5 pillars under this Atmanirbhar Bharat. First pillar is economy, second infrastructure, third one system, fourth vibrant demography, and fifth demand. So these are 5 basic pillars. So you need to remember this directly. A question can be asked: the 5 pillars of Atmanirbhar Bharat. What are these? Economy, infrastructure, system, vibrant demography, and demand. Then the special economic package that would be announced under this Atmanirbhar Bharat would be rupees 20 lakh crore. So जो 20 लाख करोड़ है, it will constitute 10% of India's GDP. ये 10% इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा. अब इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को, इंडस्ट्री को, अलग अलग सेक्शन सोसाइटी को इसमें इस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज में जो है उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया है. एंड बोल्ड रिफॉर्म्स वुड बी देयर सो दैट वी ऑल combined together this our nation can move towards self-reliance. Now our Prime Minister has given a call for vocal for our local. Vocal for local means we have to be vocal so that we start using the local products, the make in India products, right? So that the demand gets generated for our make in India products within the domestic. Because see, at this time the trade is not happening, import exports are not happening. So global demand is not there. So how to generate when there is no global demand, then how to generate demand for our domestic products? We have to start using the local products for that. So the demand has to be generated from within our country itself. Domestic demand has to be there. Coming to the package would be considered a different way, and the different slides will go through one by one. The first one is प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज. सो जो गरीब कल्याण पैकेज है, इसमें क्या है? इसमें the people who are the poor who are fighting the battle against coronavirus, बेसिकली उनको 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज है. तो किस तरह से दिया जाएगा? इंश्योरेंस कवर है 50 लाख का पर हेल्थ वर्कर, जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सो दैट बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द कोविड वॉरियर्स. देन 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं, दे विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ 5 kg wheat or rice per person for the next 3 months. 5 kg wheat and 1 kg pulses. So here 5 kg wheat or rice per person and 1 kg pulses per household. So difference है यहाँ पर ध्यान देना है for the next 3 months. Then women Jan Dhan account holders हैं, they will get rupees 500 rupees per month for the next 3 months. अगले 3 महीने के लिए 500 रुपये मिलेगा women Jan Dhan account को. and 20 करोड़ इनको आइडेंटिफाई किया गया. Gas cylinder free of cost would be given to the 8 crore poor families. We already know, we already have Ujjwala scheme for that. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Then मनरेगा wages, because वहाँ पर गैस सिलेंडर जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जाता है, only the connection was there, but here those identified families would be given free of cost gas cylinder as well. The मनरेगा वेजेस ये बढ़ा दिए गए हैं. कितना बढ़ा है ये? 182 रुपए से 202 रुपए, फ्रॉम 182 रुपीज टू 202 रुपीज. द नेक्स्ट ग्रेशिया दिया जाएगा टू द पुअर विडो, सीनियर सिटीजन एंड पुअर दिव्यांग को. कमिंग टू द सेकंड पैकेज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण.
Now here it talks about PM Kisan. So it says that 2000 रुपए to be paid to the farmers as a part of front loaded advance में दिया जाएगा इनको to benefit 8.7 crore families. PM Kisan में क्या है? Our Prime Minister announced PM Kisan a few years back, like last year back. So what was there in PM Kisan? PM Kisan basically strives to provide help to farming households. Initially, so 6,000 रुपए in total. How much? 6,000 in total in 3 installments. 2,000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो है 6,000 रुपए गरीब किसानों के लिए स्टार्टिंग में अनाउंस किया गया था. फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इट वाज देयर इन द इनिशियल हैविंग द लैंड होल्डिंग्स अप टू 2 हेक्टेयर. बट लेटर ऑन दिस 2 हेक्टेयर जो लिमिट थी इसको हटा दिया गया. नाउ इट इज टू एवरी फार्मिंग हाउस होल्ड जो इनमें आइडेंटिफाई किया गया. 2 हेक्टेयर वाली लिमिट अब हटा दी गई है. 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 करके मिलेगा अंडर पीएम किसान. तो वही 2,000 रुपए जो है ये फ्रंट एज ए पार्ट ऑफ फ्रंट लोडेड एडवांस में भी दे दिया गया. Then it talks about welfare fund for the construction workers, building and construction workers. Then it also talks about 24% of monthly wages to be given to the PF accounts अगले 3 महीने के लिए. जो वेज अर्नर्स हैं जिनकी सैलरी 15,000 पर मंथ से कम है, ठीक है, इन द इंडस्ट्रीज जहाँ पर 100 वर्कर से कम की इंडस्ट्रीज है वहाँ पर, बिकॉज वी सी देर आर सर्टेन लिमिटेशन अंडर द लेबर लॉज. अगर 100 एम्प्लॉयज या उससे ज़्यादा है तो वो इट विल कम अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. 10 या 20 एम्प्लॉय हैं इट विल कम अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट. सो एवरी अदर इंडस्ट्री दे डोंट कंप्लाई टू द बिकॉज दे डोंट हैव द. सो अगर 100 वर्कर से कम की इंडस्ट्री है तो उनको क्या करना पड़ेगा? 15,000 से कम की सैलरी है तो पीएफ अकाउंट में जो है सरकार देगी 24% ऑफ मंथली वेजेस उनको दे दिया जाएगा अभी. देन 5 करोड़ वर्कर्स जो कि ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड हैं, दे विल गेट नॉन रिफंडेबल एडवांस ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट और 3 मंथ्स ऑफ द वेजेस. जो भी कम होगा इनमें से तो 75% अमाउंट मिलेगा. इस यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा बाय गिविंग कोलेट्रल फ्री लैंडिंग. right, collateral free lending means they don't have to put anything on stake. अगर कुछ भी कोई भी चीज गिरवी रख के किसी के बेस पे जो है जरूरत नहीं पड़ेगी. without any collateral that would be allowed. Then district mineral fund. What is this district mineral fund? This district mineral fund, basically it is in a district where minerals are explored. So there, whenever in the mineral company, mineral industry is working over there, mineral mining company is there. So it results into the, we can say, degradation of the environment and also jeopardize the interest of the people living around there. So certain amount of money that those mining companies, they have to, mineral mining company, they have to put in that district mineral fund. And this fund is at the disposal of the collector. And this fund is to be used for taking care of the area around and the interest of the people whose interests have been jeopardized. आगे चलते हैं. इसके बाद ये बात करता है ऑन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांस, आरबीआई हैज रेज्ड वेज एंड मीन्स एडवांस of states by 60% and enhance the overdraft duration limits. What is wage and means advance? Wage and means advance basically when there is a mismatch in the receipts and expenditure of the government. तो अगर एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा, सपोज करते हैं बजट अनाउंस किया, एक्सपेंडिचर आपका अभी तो एक्सपेंडिचर होना है स्टार्ट बट रिसिप्ट्स आने में टाइम लगेगा, राइट. सो देयर इज अ मिसमैच एट द स्टार्टिंग. अगर मिसमैच है स्टार्टिंग में तो पैसा चाहिए सरकार को खर्च करने के लिए, तो वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है वहां पर, बिकॉज रिसिप्ट जनरली कम अराउंड द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली, वेयर एज एक्सपेंडिचर स्टार्ट्स हैपनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू यहाँ पर बात की जा रही है. देन इनकम टैक्स रिफंड्स जो हैं, पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड्स हैं अप टू ₹5 लाख, वो इमीडिएटली दिए जाएंगे. ऐसा क्यों किया जा रहा है? जस्ट टू एंश्योर पीपल दे हैव मोर एंड मोर मनी एट डिस्पोजल. अभी जरूरत है पैसों की क्योंकि बहुत लोगों की नौकरियां या तो चली गई या फिर कम
they are getting very low income at this right now. Businesses ठप पड़ गए हैं. So all these things, so that more and more money can be given to the people at their disposal, ताकि वो खर्च कर पाए अपना. ठीक है. स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट, कमिंग टू द इमरजेंसी हेल्थ रेस्पॉन्स पैकेज एज वेल. Other measures may we see relaxation in statutory and compliance matters. So here, what do we see? Just a moment. So it talks about extending the income tax returns. जो IT returns हैं, ID returns को extend कर दिया गया ताकि because second GST returns को भी extend कर दिया गया, right? So all these are some measures that have been announced. And coming to the next, measures taken by RBI, because we will discuss those measures, those things that is important from our exam point of view. जो कि एग्जाम में, प्री में या मेंस में कहीं पर ही प्री में या तो पूछे जा सकते हैं और मेंस में आप कहीं यूज कर सकते हैं. दोज थिंग्स वी विल डिस्कस. CRR जो बताया, CRR को रिड्यूस कर दिया गया यहाँ पर. रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो हैज रिजल्टेड इन लिक्विडिटी एनहांसमेंट. CRR अगर कम करेंगे तो व्हाट विल हैपन? सो आरबीआई ने CRR को कम किया, सो इट विल रिजल्ट इन टू मोर लिक्विडिटी. CRR इज व्हाट? CRR is that percentage of NDTL, net demand and time liability, that is the total bank deposits of the bank. So that particular percentage of the bank deposits or NDTL, net demand and time liability, that banks have to keep in cash in RBI. That is the CRR. अगर वो कम होगा तो more liquidity will be there. Banks will have more money to lend. Then long-term repo operations, 100,000 crores for fresh deployment in investment grade corporate bonds. ठीक है, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ एनबीएफसी एंड एमएफआईज. तो किया क्या जा रहा है यहाँ पर? एनबीएफसी एमएफआईज वगैरह में इनमें लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया जा रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में. देन बैंक्स लिमिट फॉर बोरोविंग ओवरनाइट अंडर द एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको इंक्रीज कर दिया गया है, बैंक्स के लिमिट को. MSF क्या है आपको पता होना चाहिए. इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी. So marginal standing facility, it's a kind of the penal rate, you can say. How generally it is kept aligned with the bank rate के साथ इसको लाइन रखा जाता है marginal standing facility को. See what happens in what is SLR? SLR is a particular percentage of NDTL, net demand and time liability, or the bank deposits that the bank they have to keep aside with themselves in terms of cash, gold और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो अगर बैंक्स अपने पास ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखते हैं अलग से, उसको लैंड नहीं कर सकते. दैट कांट बी यूज्ड बेसिकली, दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जनरली यूज नहीं कर सकते, बट अंडर सीरियस लिक्विडिटी करंट सिचुएशन दैट कैन बी यूज्ड एज वेल. और वो प्रोविजन एमएसएफ के अंडर है. तो एमएसएफ के अंडर जो है वो पर्टिकुलर एसएलआर वाली सिक्योरिटीज भी बैंक कैन यूज बाय गिविंग देम टू आरबीआई एंड टेकिंग लोन फ्रॉम आरबीआई. ठीक है, तो उस लिमिट को बढ़ा दिया गया. जो 2% के अराउंड जो लिमिट थी, उस लिमिट को बढ़ा दिया गया, सो दैट बैंक्स कैन यूज दैट एसएलआर वाली सिक्योरिटी टू गेट लोन्स एंड दैट कैन फर्दर ब्रिंग इन द लिक्विडिटी. Another measures taken by RBI. अब यहाँ ये बता रहे हैं कि रीफाइनेंस फैसिलिटी को अनाउंस किया गया टू नबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी. ऑल दीज आर व्हाट? नबार्ड, एनएचबी, सिडबी, ऑल दीज आर रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बेसिकली. तो पॉलिसी रेपो रेट भी इनको मिलेगा यहाँ पर. देन स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी यहाँ पर ये दिया जा रहा है. ठीक है, ऑलराइट. देन मोरिटोरियम फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक अगर भाई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करना है तो वो भी एक प्रोविजन सरकार ने रखा है. बिकॉज पीपल दे डोंट हैव मनी टू पे, सो दे कैन वो 3 महीने तक ना भी पे करना चाहिए, दैट विल बी फाइन. उसका भी प्रोविजन यहाँ पर रखा गया. Now we will discuss about various things that have been announced by government in MSMEs, regarding MSMEs. So here first,
आपका कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स, विदाउट एनी कोलेट्रल्स लोन मिलेगा फॉर एमएसएमईज, businesses including MSMEs. Then we also talk about MSME funds of funds. Through funds of funds भी MSME में इक्विटी इन्फ्यूजन किया जा रहा है. न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME ये भी अनाउंस की गई, अभी अभी देखेंगे हम स्लाइड में. What is the new definition of MSME? Earlier it was based on the investment. Now it is based on investment as well as turnover. Then all right, now see them one by one. So the first is 3 lakh crore collateral free automatic loans for businesses. तो automatic collateral free loan मिलेगा to MSMEs and businesses. 20,000 crore subordinate debt for stressed MSMEs. तो यहाँ पर डेट के उसमें स्ट्रेस्ड MSMEs के अंदर लिक्विडिटी दी जा रही है यहाँ पर बाय पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स. देन 50,000 crore इक्विटी इन्फ्यूजन, यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूजन किया जा रहा है in MSMEs through funds of funds. So funds of funds के through there is provision of equity infusion in MSMEs. बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, just have a brief idea. इतना ही काम करेगा. So funds of funds will be operated through mother fund and a few daughter funds. So funds of fund कैसे काम करेगा? Through mother fund and the daughter funds. And there will be also encouragement for MSMEs to get listed so that they can grow big. Now there is new definition of MSME. Now low threshold in MSME definition have been created. A fear, so जो low threshold definition था MSME का, that has created fear among the MSMEs of graduating out of the benefits. Suppose threshold कम है, तो MSMEs को लगता है कि थोड़ा सा अगर उन्होंने और ग्रो किया तो MSME नहीं रहेंगी, और फिर अगर वो MSME नहीं रहेंगी तो वो जो बेनिफिट उनको मिल रहे थे फॉर बीइंग एन MSME वो नहीं मिलेंगे. सो इट वाज एक्टिंग एज अ डिसइंसेंटिव फॉर देम टू ग्रो बिग. सो इट वाज किलिंग द अर्ज टू ग्रो. लेकिन हम क्या चाहते हैं? MSMEs ग्रो करें. ग्रो करेंगे तो इफ सर्टेन काइंड ऑफ बेनिफिट्स आर गिवन टू MSME यू कैन रिलैक्स दोस. एक उसकी थ्रेशोल्ड आप बढ़ा सकते हैं. So now announcement definition of MSME will be revised. Investment limit will be revised upwards. So definition देख लेते हैं हम यहाँ पर. So here this one is the old definition and this is the new definition of MSMEs. तो पहले देखते हैं, पहले क्राइटेरिया जो था मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज दोनों के लिए अलग अलग था. नई वाली डेफिनेशन में फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बोथ सेम है. पहले वाले में क्या था? मैन्युफैक्चरिंग का क्राइटेरिया ज्यादा था, सर्विस एंटरप्राइज का क्राइटेरिया कम था. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्ट और सेकंड डिफरेंस है, इन द ओल्ड क्राइटेरिया द क्राइटेरिया वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, न्यू क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर, दोनों के ऊपर. पहले 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़ तक का क्राइटेरिया था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस. नाउ हमें नए वाला क्राइटेरिया याद रखना है, पुराने वाला यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस, अदरवाइज रिमेंबर द न्यू क्राइटेरिया. ये इंपॉर्टेंट है काफी. इट कैन बी आस्क्ड और इन द प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस यू कैन यूज इट समवेयर. देन इफ यू सी इन द न्यू डेफिनेशन ऑफ MSMEs, revised definition, here for the manufacturing services both are same clubbed together. If the investment is less than 1 crore rupees it and turnover is less than 5 crore rupees, तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, दैट विल बी टर्म्ड एज माइक्रो एंटरप्राइज. और अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 50 करोड़ से कम, स्मॉल हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम, टर्नओवर 100 करोड़ से कम, इट विल बी मीडियम. तो याद कैसे रखना? देखो 1 करोड़ और 5 करोड़ याद रखो कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ की का टर्नओवर वो माइक्रो होगी. ठीक है, ये 5 टाइम्स है, 1 और 5. अब स्मॉल में जाने के लिए इट इज 10 टाइम्स. 1 का 10 हो गया. स्मॉल से मीडियम में गए, इट इज ट्वाइस, 2 टाइम्स. सेम यहां पर है, देखो 5 का 50, 10 टाइम्स, 50 का 100, 2 टाइम्स. So you can remember in this way. Then talks about global tenders to be disallowed up to 200 crore rupees.
कहने का मतलब क्या है कि 200 करोड़ रुपए तक के जो भी टेंडर हैं, जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, बिकॉज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स उनको भी डिफरेंट टेंडर्स निकालने पड़ते हैं, तो उन टेंडर्स के लिए ओनली डोमेस्टिक फर्म्स विल बी अलाउड। तो डोमेस्टिक फर्म्स को प्रमोट करने के लिए किया गया, हियर यू कैन सी Indian MSME and other companies, global tenders will be disallowed in the government procurement up to 200 crore rupees. So इससे क्या होगा? It is a move towards self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, and support Make in India, because domestic firms will be preferred in this. And this will also help MSMEs, because बहुत सारी जो ये कंपनी जो डोमेस्टिक फर्म्स जो टेंडर में बिड करेंगे वो कौन होंगी? MSMEs होंगी. Now certain other interventions for MSMEs, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं. ई मार्केट लिंकेज किया गया फॉर MSMEs टू एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, बिकॉज ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशंस तो हो नहीं पाएंगे अब, तो कैसे उनको प्रमोट किया जाए, ब्रांडिंग कैसे बनाई जाए? ई मार्केट लिंकेज के थ्रू. ई मार्केट प्लेस, बिकॉज वी नो GEM इज देयर. व्हाट इज GEM? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है. Next is 2500 crore rupees EPF support for business and workers for 3 more months. EPF की सपोर्ट दी गई है कि जो बिजनेस और वर्कर्स हैं उनको सरकार की तरफ से अगले 3 महीने के लिए EPF की सपोर्ट दी जाएगी. अब इसमें देखो क्या किया गया, एक चीज और भी इसमें बताई जाएगी कि जनरली क्या होता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पेमेंट ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉयर एंड 12% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाज मेड इनटू द EPF अकाउंट. ठीक है. अब ये 24% जो है वो कंट्रीब्यूशन होता था, राइट. अब इसको कम करके टोटल 20% कर दिया गया. तो इसका मतलब EPF की जो डिडक्शन थी वो 24% से अब 20% हो गई है. 10-10%, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%. उससे क्या होगा? तो यहाँ पर जो ये जो सपोर्ट है सरकार की तरफ से, दिस विल बी ए 24% support will be given to the employees and MSMEs, to the businesses. This support will be extended by another 3 months to salary months of June, July and August. So ये एक सपोर्ट दिया जाएगा so that the formal employment की तरफ जो ट्राई कर रहे हैं, जो MSMEs हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, so that certain amount can be given by the as a support by the government to the employees and MSMEs. MSMEs के थ्रू employees को वो दिया जाएगा. देन EPF कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स. ये लिक्विडिटी सपोर्ट है. कैसे? एक स्टैट्यूटरी PF कंट्रीब्यूशन है फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. ये जो 10%, 12% से 10% कर दिया गया. नाउ अगर देखें दोनों 12% से 10% हो जाता है, देन इट कलेक्टिवली कंबाइंस टू बी 20%. 24% से 20% का आपका डिडक्शन कम हो गया. सो डिडक्शन इज रिड्यूस्ड. इट मीन्स व्हाट? तो सैलरी है वो कट के नहीं आएगी. सैलरी अगर कट के नहीं आएगी, इट मीन्स मोर टेक होम सैलरी इज देयर, मोर डिस्पोजेबल इनकम इज देयर, राइट, एंड पीपल विल हैव मोर मनी at their hand to spend. Then here we have 30,000 crore rupees of special liquidity scheme for non-banking financial companies, housing finance companies and micro financial institutions. So liquidity package kind of कि liquidity को infuse करने के लिए, we have seen in the various other initiatives as well, focus has been over to infuse the liquidity because demand है नहीं, लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा है, so liquidity को infuse किया जा रहा है. Then partial credit guarantee scheme as well for the NBFCs. ये भी सेम वही है कि आपको बेसिकली लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स. पावर डिस्कॉम्स के अंदर भी कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, राइट, बिकॉज ऑफ डिमांड रिडक्शन. अब काम नहीं हो रहा इंडस्ट्रीज में तो क्या होगा? पावर की डिमांड कम हो गई है तो कैश फ्लो कम हो गया है पावर डिस्कॉम्स में. सो रेवेन्यूज ऑफ पावर डिस्कॉम्स हैव प्लमेटेड, बिल्कुल गिर गए हैं, राइट. So loans will be given against state guarantees for exclusive purpose of liability of discom to the Gencom. जो जनरेशन कंपनीज हैं उनको जो पैसा देना डिस्कॉम्स ने,
वो पैसा एज ए स्टेट गारंटी की तरफ से लोन दिया जा रहा है। Then there is a relief to contractors have also been given, उनकी जो एक्सटेंड कर दिया गया, जो भी उनका टाइमलाइन जो था अभी, जो भी प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, राइट। Then there is extension of registration and completion of date of real estate project under RERA. What is RERA? RERA is Real Estate Regulatory Authority. So RERA was instituted to ensure a transparent and predictable and stable growth of real estate sector. तो जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो मेल प्रैक्टिसेस की जा रही थी उनको कर्ब करने के लिए एंड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंट ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर हैपेंस, रीरा एस्टेब्लिश किया गया था। रीरा ने बहुत सारी कंडीशंस लगाई थी जब ये आया था कि इतने साल तक का अगर प्रोजेक्ट है तो पूरा होना चाहिए, नहीं पूरा होता है तो एक्शन लिया जा सकता है, कुछ पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टू ऑल्सो केप्ट असाइड फॉर ए पूल एज वेल, कुछ कंडीशंस थी, राइट। लेकिन अभी सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, वी नो, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड कोविड-19 पैंडेमिक। सो उन कंप्लीशन प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन की डेट्स थी उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। सो सर्टेन रिलैक्सेशन हैव बीन गिवन, एक्शन नहीं लिया जाएगा अभी। सो टीडीएस टीसीएस की रेट में रिडक्शन कर दिया गया। सो इट विल डू व्हाट, इट विल अगेन इन्फ्यूज लिक्विडिटी, बिकॉज टीडीएस इज व्हाट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सो दोनों ही केस में जब टैक्स का जो डिडक्शन है जो सोर्स पे हो रहा है तो इमीडिएटली अगर वो कम होगा तो इट मींस लेस अमाउंट हैज टू बी स्पेंट। लेस अमाउंट हैज टू बी स्पेंट मींस व्हाट, मोर मनी इज एट द डिस्पोजल, मोर लिक्विडिटी विल बी देयर। आप लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए। Certain other direct measures it talks about that all the pending refunds to charitable trust and non-corporate businesses professional that will be given immediately। जब जैसे मैंने बात की थी 5 लाख तक का रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, वो दिया जाएगा इमीडिएटली, सेम यही इनके लिए अनाउंस किया गया। अदर डायरेक्ट मेजर्स, देन there is विवाद से विश्वास scheme as well. Now this विवाद से विश्वास scheme, this period was earlier 31st March and if in certain cases till 30th June. So दो डेडलाइन थी, मार्च एंड जून। फर्स्ट डेडलाइन इन मार्च, अनदर डेडलाइन इन जून, 31st मार्च और 30th जून, राइट। बट अब हमें विवाद से विश्वास है क्या बेसिकली, इट मीन्स जो भी वट एवर द टैक्स लिटिगेशन आर देयर, कि जो भी विवाद है, कौन सा विवाद की बात हो रही, टैक्स विवाद। सो वट एवर द टैक्स लिटिगेशन आर देयर, सो जिन भी टैक्स लिटिगेशन में रेवेन्यू इज इन द अपील और वेदर एसएससी इज इन द अपील, तो बेसिकली वहां पर क्या किया गया है कि टू रिड्यूस द लिटिगेशन, राइट। सो विश्वास बनाया जाएगा, और ये विश्वास कैसे बनाया जाएगा, बिकॉज विवाद से विश्वास के थ्रू दैट लिटिगेशन वुड बी यू कैन से एलिमिनेटेड। वो कैसे, कि जो टैक्स पेयर है, जो भी पैसा डिस्प्यूट में था, ओनली दैट मनी दे कैन गिव, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, जो वट एवर टैक्स इज इन डिस्प्यूट उसके ऊपर फाइन भी लगता है, पेनल्टी भी लगती है, ठीक है, इंटरेस्ट भी लगता है। और कई बार क्या होता है, ये फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट ये लग के जितना टैक्स है, जितना टैक्स इन डिस्प्यूट है उसके बराबर हो जाता है, उससे ज्यादा भी हो जाता है। सो उस टाइम पर तो देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द टैक्स पेयर टू बेसिकली एंड अप द लिटिगेशन। लेकिन अभी इस विवाद से विश्वास की में क्या ऑफर किया गया था कि वट एवर टैक्स वॉज इन डिस्प्यूट यू कैन फोरगो पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, जस्ट पे द टैक्स एंड एंड अप द लिटिगेशन। सो विवाद से विश्वास की तरफ जाने का ये एक स्कीम थी। So thank you, that's all for today's Atmanirbhar Bharat class of today's. We will discuss some other documents of Atmanirbhar Bharat as well, as and when they come. Very soon we will upload other videos as well. And if you like our video, you can join our group as well. You can ask the questions if you have any question regarding UPSC preparation, then you can join our Telegram channel. The link of that Telegram group has been given in the description box given below. And this Telegram group, you can find the selected candidates there. So we are certain civil servants
who are ready to help you in this phase of preparation. If you like this video, please do subscribe, like this video and share it as well. Thank you. Thank you very much.